which protocol is used to securely transfer web data between a browser and a server ताले केउ प्रोटोकॉल को यूज करा जाए सिक्योरली ट्रांसफर करबा पई वेब डाटा कहा कहा मध्य रे गोटे ब्राउजर एंड गोटे सर्वर मध्य रे अर्थात वी नो प्रोटोकॉल मींस नेटवर्किंग क्षेत्र रे रूल एंड रेगुलेशन को कोन को जाए प्रोटोकॉल को जाए अर्थात तो किछि गोटे रूल एंड रेगुलेशन रहिछि जहा द्वारा सुरक्षित भाव रे वेब रो जो डाटा रहिछि सेटा को ट्रांसफर करा जिवो कहा कहा मध्य रे ब्राउजर गोटे एग्जांपल जदि नबा गूगल क्रोम एंड सर्वर मींस आपण ब्राउजर रे जो वेबसाइट को सर्च करिवे क्लियरली बुझिला गूगल क्रोम ब्राउजर रे जो वेबसाइट सर्च करिवे दैट इज ताहा सर्वर निकट को जिवो एवं आपण जहा सर्च करिवे सेटा होची वेब रो डाटा ठीक अछि तो सेटा को ट्रांसफर करिया पई जो प्रोटोकॉल यूज करा जाय दैट टू सेटा सिक्योरली सुरक्षित भाव रे देन व्हिच ऑप्शन हेबो आपण राइट आंसर ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिंग तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर https बिकॉज़ एटा काहे केला देखंतु आपनकर गोटे URL रहिछि आपण जेउठारे सर्च करंती सेटा होछि URL एटा कोन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जहा को वेब रो एड्रेस को जाय एवं जेतेले आपण एठार किछि भी सर्च करिवे दैट इज प्रथमे https रु आरंभ होबो देन आपण www.google.com .youtube.com facebook.com जहा भी किछि सर्च करिवे मींस वेब डाटा को ब्राउजर रु आपण आरंभ करिवे सर्च ता सर्वर रे जाई पहुंचबो देन सेठारु आपण को रिस्पांस आसीबो क्लियर सो ऑप्शन सी https इज योर राइट आंसर ftp हमें जानि छथि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एही ftp को यूज करा जाय डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग पे सर्वर कंप्यूटर और कथा जो देबा कंप्यूटर रे थिबा आपनकर लोकल फाइल रु कोनोसी फाइल को आपण सर्वर को नेबे दैट इज अपलोड एवं सर्वर रु कंप्यूटर को नेगी आसीबे दैट इज कहजबो डाउनलोड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को सेंड करबा पई SMTP को यूज करा जाय ओके एवं HTTP तो जानि छथि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बट जदि सेकरे एस ऐड हबो दैट इज फॉर सिक्योरिंग सुरक्षित भाबरे फाइल को ट्रांसफर करा जाय क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिशिंग कोहंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक फिशिंग कहि परिबा फिशिंग रो डेफिनेशन हि परिबो फिशिंग अटैक हुए इट मींस व्हाट इट मींस ऑप्शन ए कहउचे वायरस दैट इन्फेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी ए मेथड यूज्ड टू फिजिकली ब्रेक इनटू ए सर्वर रूम ऑप्शन सी एन अटैक दैट यूज deceptive emails or website to steal personal information option C ठीक लागुची a denial of service attack on a network option C हबो राइट आंसर गोटे अटैक हबो दैट यूज deceptive emails माने कोन किछि मिसलीडिंग ईमेल्स किछि फ्रॉड पर्पस रे ईमेल को सेंड करा जिवो और गोटे वेबसाइट को एक्सेस करिवा पई अलाउ दिया जिवो जहा जरिया रे पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करा जिवो तो दैट इज फिशिंग ऑप्शन सी हबो हियर राइट आंसर Next question number 3. Which type of malware is known for encrypting a user's file and demanding payment for the decryption key? Which type of malware? Malware माने कोन देखंतु माल माने होची that is harmful. Okay. And ware माने होची software. माने गोटे प्रोग्राम जहा जरिया रे कंप्यूटर को कोन आछबो हार्म आछबो that is होची malware. क्लियर ताले निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रकारर malware अटे जहा जणा जाय यूजर रो फाइल को से कोन करिवो एनक्रिप्ट करिवो सिंपली जदी बुझिबा पासवर्ड को अप्लाई करा जिवो बट जेतेबेले जने यूजर एटा को ओपन करिवा पई चाहिबो मींस डिक्रिप्ट करिया पई चाहिबो तो सेही समय रे पेमेंट्स रो डिमांड हेबो तो सेही प्रकार रो मालवेयर को कहजिवो ऑप्शन सी रैनसमवेयर मालवेयर कहजिवो ठीक अछि देन वर्म आल्सो गोटे मालवेयर जहा सेल्फ रेप्लिकेट हबो मींस इट सेल्फ रिप्रोड्यूस हबो ट्रोजन हॉर्स आल्सो गोटे मालवेयर एडवेयर होची एडवर्टाइजमेंट थ्रो रे जो आपन को वायरस आसीबो दैट इज एडवेयर क्लियर एडवेयर एंड वायरस आल्सो गोटे मालवेयर रो पार्ट ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए फायरवेल कोंतु फायरवेल रो प्राइमरी गोल कोन अटे फायरवेल कोथि पय यूज करा जाय फायरवेल को यूज करा जाय ऑप्शन बी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू or from private network it means simply बुझंतु आपन को सिस्टम रे unauthorized access होबा पई देबो नाही firewall यो next in MS access what is the primary purpose of a
क्यूरी रो प्राइमरी पर्पस कोन ऑप्शन बी to retrieve and manipulate data based on a certain criteria. So option B is your right answer. Query object ro kamo. Next, which of the following is not a database object in MS Access? MS Access रे निम्नलिखित मध्यरु केउटा एको database रो object हेबो नाही. database रो object हेबो नाही. देखंतु एथरे टेबल रहिछि, query रहिछि, form रहिछि किंतु folder हेबो नाही. Option D is your right answer. Option D. Next, what does a primary key do in a database table? Database table रे primary key कोन करिवो? Primary key रो काम कोन? Primary key होछि एको uniquely identifies each record in a table. Option C is your right answer. Okay, uniquely each record को identify करिवो, that is गोटिए table रे, that is primary key. Which view is used to look at the structure of a table in MS Access? अर्थात माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस रे टेबल को स्ट्रक्चर व्यू रे आपण देखिया पई चाहते सेटा होची डिजाइन व्यू. ऑप्शन बी डिजाइन व्यू हेबो यार राइट आंसर. बट बाय डिफॉल्ट थाय डाटा शीट व्यू. बाय डिफॉल्ट कोन थाय डाटा शीट व्यू जहा जरिया रे आपण टेबल फॉर्म रे देखि परिबे, बट टेबल को स्ट्रक्चर आकार रे दैट इज डिजाइन व्यू. मन रखंतु. Which of the following is the correct file extension for an MS Access database? MS Access गोटे application software अटे. Microsoft Office रो गोटे पैकेज और Microsoft Office bundle रो गोटे पार्ट होची MS Access. तो यार एक्सटेंशन माने एटा केउ प्रकार रो फाइल .scc.db मन रखंतु. scc for access, db for database. तो एमित्रे मन रखिबा. ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर. Next, which of the following is an example of a web browser? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एको वेब ब्राउजर रो एग्जांपल अटे. निम्नलिखित मध्यरु केउटा एको वेब ब्राउजर रो एग्जांपल अटे. Google, Mozilla Firefox हेबो. Mozilla Firefox because Google गोटे सर्च इंजिन कहि परिबा. Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, Microsoft रो Outlook, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जहा ईमेल्स में यूज करा जाय. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सर्च इंजिन? सर्च इंजिन रो पर्पस कोन हि परिबो कोंतु. सर्च इंजिन जेमिति आपनकर गूगल, बिंग, ठीक अछि गोटे गोटे सर्च इंजिन. तो यार पर्पस होची टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट रे इंफॉर्मेशन को सर्च करबा काम होची सर्च इंजिन रो पर्पस. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट? वेब ब्राउजर आवश्यक, इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक, डिवाइस लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन आल्सो आवश्यक. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हेबो यार राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which protocol is used to send email? कहंतु ईमेल को सेंड करबा पई केउ प्रोटोकॉल को यूज करा जाय? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. राइट, which layer of the OSI model is responsible for routing? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल रे 7टी लेयर रहिछि. गोटे रेफरेंस मॉडल भाबरे यूज करा जाय एवं वर्किंग मॉडल होछि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, ताले OSI मॉडल रो केउ लेयर रे राउटिंग हबो? दैट इज नेटवर्क लेयर. ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर इज योर राइट आंसर. ओके, बेस्ट पाथ को से डिटरमिन करिवो बेस्ट पाथ. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच इन ए नेटवर्क? गोटे नेटवर्क रे स्विच रो काम कोन? दुईटा डिफरेंट डिवाइस को से कनेक्ट करिवो, बट ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट हबो टू फॉरवर्ड डाटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट डिवाइस. ऑप्शन सी कहि परिबा हेरो राइट आंसर. What is the default port number for HTTP? It means HTTP hypertext transfer protocol रे port number means number of traffics, we can say 80. Option C is your right answer. That is the default. Which of the following is not an example of an operating system? देखो Windows को operating system, Linux operating system, जेमति आपनकर Mac operating system किंतु Oracle होचे एक application, एक database रो application software अटे. Okay, option C have right answer. What is the main function of an operating system? Operating system रो मुख्य काम होची मैनेज करिवो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को. ठीक अछि, ऑपरेटिंग सिस्टम आपन को कंप्यूटर को रन करेबो. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम होची एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. Which component of the operating system manages file storage? File system. Option C is your right answer. ठीक अछि. Next question, what is the purpose in an operating system?
sorry, what is a process in an operating system? Operating system रे process माने कौन कौन? Process माने कौन? Process माने होची file or program. Execution so option है. A program in execute हवा अर्थ that is process हवा. Okay, process हवा. Here right answer. Option A हवा right answer. Next, how do you insert a new slide in PowerPoint? PowerPoint रे new slide को insert करा दियो. Control M. Option A is your right answer. In MS PowerPoint, slide shutter command is found under which ribbon tab? Q tab under a slide shutter. Slide shutter view रे कौन करी परिवे? thumbnail आकार देखि परिवे. Slide को rearrange करा जाई परिवो. Next, which of the following is not one of the PowerPoint view? Presentation view है right answer. Presentation view. What is the primary purpose of a database in MS Access? Primary purpose होची to store and manage data. Data होची unprocessed item एहा को store करिवा and manage करिवा. Data जेतेबेले processed हबो एहा को information को हाजिबो. Which MS Access object is used to view, add, edit and data and deleted data? View करिवे, add करि परिवे, edit करि परिवे and deleted data को. That is कौन हिजबो आपनकर? Form जरिया रे तो input दिया जाए. तो option B है right answer. What is the purpose of a primary key in MS Access table? Already discuss करि सेक्शन primary key टा होचे को uniquely identify each record करिवो. Option A. कुछ question just modify अछि. Which MS Access feature allows you to extract specific data from one or more tables? Extract करिवो माने that is कहलिवो query. Query हेबो यार right answer. Okay, extract मन रखंतु. That is बाहर करिवा, data को बाहर करिवा होची query रो काम. What is the purpose of a relationship in MS Access? Relationship माने कोन? That is relationship द्वारा to combine data from multiple tables. Multiple tables रो data को combine करिवा होची गोटे relationship create करिवा. Option A is your right answer. What is the full form of GPRS? कोंतु GPRS रो full form कोन होई जिवो? GPRS रो full form होची General Pocket Radio Service. Option C. General Pocket Radio Service. Next question. What is the file extension for compressed file? Very important. Zip file मान रखंतु. एवं एहर application कथा जदि हबा WinZip हेबो. WinZip. Next. What is the shortcut key for apply double underline in MS Word? Control Shift plus D. For applying double underline ପାଇଁ ଆପଣ Control Shift plus D apply କରନ୍ତି. Background color of a document is not visible in print preview. Print बाहर करिवार पूर्व view टा होची print preview रे background color visible हेबो नाही. Next, name the application under MS Office software bundle that we use to create audio visual presentation. Microsoft PowerPoint, Excel spreadsheet for calculation, Word होची आपनकर word processing access database. Next, in Microsoft Word you can enhance the look of an entire document by applying आपण सेथिरे themes को apply करंतु different style रो themes द्वारा. That is कोन हेबो एरो जो look टा रहिचे enhance हेबो वृद्धि पाइबो. In computers CAD stands for CAD रो full form कोन हिजबो? CAD होची computer aided design. CAD मन रखन computer aided design. Next, which of the following list that headings and their corresponding page number ता table of contents रे आसीजो. प्रत्येक बुक रो फर्स्ट पेज रे थाय ना, that is table of contents. Next, the computer network LAN stands for local area network. Option B हबो right answer. Local area network. Which of the following option in Microsoft Excel can be used to print only specific area or range of a cell on a worksheet? Specific कथा आसीबो माने that is print area को आपण चूज करिवे. Option A. Next, S is the range of cell where the lookup values you want to return by the function are located. That is table area को हाजिबो. Option D is your right answer. S is a connection from one slide to another or connection to a web page or a गोटे file. आपण simply connection देबे गोटे लोकेशन रु अन्य एक लोकेशन को जल्दी बुझिए ना. that is कहलियो hyperlink. एवं एहर शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस के मन रखंतु. कंट्रोल के हाइपरलिंक. ए सुपर कंप्यूटर कोन होई परिबो कोंतु? सुपर कंप्यूटर गोटे कोन होई परिबो? ऑप्शन ए रे कहल जायछि प्रोसेस डाटा फ्रॉम एट लीस्ट 10,000 यूजर्स एट वंस. ऑप्शन ए ठीक हबो. प्रोसेस करै परिबो डाटा को. एंड वी नो सुपर कंप्यूटर गोटे फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रे आल्सो होई परिबो. ठीक अछि. बट एहर जदि हमें एप्रोप्रिएट डेफिनेशन को जिबा सुपर कंप्यूटर गोटे फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम. फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम एंड एहा सहित ऑप्शन ए एंड सी आल्सो कहा जाय पारे. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी को चूज करिबा. ऑप्शन डी
is your right answer. Okay, next question. The basic architecture of a computer was developed by. Computer रो basic architecture को किए develop करथिले कोंतु which option है यार right answer. Computer रो basic architecture को develop करा जायछि कहा द्वारा जॉन भॉन न्यूमैन. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए समस्त चूज करछन्ती जॉन भॉन न्यूमैन is your right answer. Next, arithmetic functions of the ALU include ALU arithmetic logic unit which is part of CPU. एटा CPU रो गोटे पार्ट. देन एथरे जो arithmetic function करा जाय ALU accomplish करे arithmetic function को कोन हे परियो addition, subtraction, division and multiplication means option D. Addition हे परियो subtract, divide and multiply. So option D is your right answer. Next, central processing unit is a combination of control and storage, control and output, arithmetic logic and input, arithmetic logic and control unit. Option D. Central processing unit, CPU, brain of the computer, combination of options अनुसार arithmetic logic and control unit. Next, the MICR is a device used to read characters in the form of magnetic ink paper. ठीक अछि MICR होछि magnetic ink character recognition. That's why option C have a right answer. Program on which of the following storage device is always virus free? Virus free. Hard disk रे also virus आसी परिबो, no doubt. Floppy disk मध्ये होई परिबो and compact disk रे मध्ये virus होई पारे because virus spread होई परिबो. So virus free we can't say. So none of these ही लागुछि. Okay, option D, none of these. It means प्रत्येक डिस्क रे virus attack होई पारे. Option D is your right answer. Next, IBM 1401 is IBM 1401 कंप्यूटर को यूज करा जाउथला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे. ऑप्शन बी मन रखंतु सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे. नेक्स्ट, EBCDIC स्टैंड्स फॉर कोन हबो कहबा EBCDIC रो फुल फॉर्म कोन हेबो. EBCDIC रो फुल फॉर्म हेउची Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Option A is your right answer. That is the full form of EBCDIC. ठीक अछि. Next question number 9. Floppy disks are typically found in diameter of 3 inches रही परिबो, 5.25 inches available रहिछि and 8 inches also available रहिछि. So all of the above is your right answer. Option D. Next, hard disk is coated in both sides above magnetic metal oxides. मन रखंतु option A हेबो यार right answer. Magnetic metal oxides. Next, which of the following is not an application software? Microsoft रो Word एको application software, Excel, PowerPoint also एको application software जहा MS Office रो package अटंती. So none of these. समस्त गोटे गोटे हेई परिबे. तो option रे गिवन नाही. None of these कहबा. इट नॉट कहिछि ना not कहिछि. Next, the basic goal of computer process is to convert data into information. Data हेउछि unprocessed item, जेतले सेटा processed हेबो information रे convert हुए. An error is also known as an error. Error no, an error. Error को कोन कहजियो bug कहजियो. Then एटा जेतले solve हबो सेटा को debug कहजियो. Graphically जोटा represent हबो गोटे folder को और किबा file को that is icon कहजाय. Option A हबो. Error आसीबा को bug कहजियो bug, then सेटा solve भेले debug हबो. आइकन कोन जानिले. नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट रे होस्ट भाबरे काम करंती. होस्ट एवर राइट आंसर ऑप्शन ए होस्ट को हजिबो. एवं मॉडेम होची मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल रे ट्रांसफर करेबो. ओके, समिति आपनकर सर्वर होची गोटे कंप्यूटर जहा सर्विस प्रोवाइड करिवो काहा को क्लाइंट कंप्यूटर को. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विथ ए सर्वर with your internet service provider, ISP रो फुल फॉर्म हेउची इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, your computer needs to connected by a modem. सेति पय गोटे modem को आपन को इंस्टॉल करिवार अछि. Modulation and demodulation. The science that attempts to create machines to emulate the human thought process is called AI, artificial intelligence. Option C हेबो यार राइट आंसर. Next, which of the following each statement is wrong? Windows XP is an operating system, ठीक है परिबो. MS Word is a word processing software, ठीक. Photoshop is a graphically designed tool by Adobe. Photoshop
ठीक लगुच बिकज फोटोशॉप रे आपण ग्राफिकल डिजाइन करि परिबे राइट लिनक्स इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो सबुडा ठीक अछि कोन पछिछि प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग निम्नलिखित मध्यरु केउटा रॉन्ग अटे आई थिंक ऑल आर करेक्ट लिनक्स टा भी आपनकर फ्री एंड ओपन सोर्स अटे फोटोशॉप गोटे फोटोशॉप टा आपनकर टूल बाय एटोबी फोटोशॉप गोटे एप्लीकेशन आउसो ऑप्शन सी को कंसीडर करा जाई पारे कि टूल मध्ये होई परिबो बिकॉज़ एटा अपन वेब रे यूज करि परिबो राइट आई थिंक सबुडा को ठीक अछि नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 18 URL stands for uniform resource locator option C है यार राइट आंसर uniform resource locator next you should save your computer from आपण को कंप्यूटर को आपण सुरक्षित जदि रखिया पई चाहंती ओके सेव माने नॉट कंप्यूटर रे किछि सेव करबा ठीक अछि माने कंप्यूटर को वायरस देन रहला टाइम बम्स एटा भी गोटा मिलिशियस वायरस अटे वर्म्स एटा विथआउट यूजर इंस्ट्रक्शन रे स्प्रेड करबो दैट इज आल्सो वायरस मींस ऑल ऑफ द अबव ए समस्त कबळरू आपण को कंप्यूटर को आपण सुरक्षित रखिया पई चाहिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव स्टार्ट बटन जो ट्रेडिशनली स्टार्ट बटन थाए ता विंडोज 8 रे नाही डायरेक्ट एथरे स्टार्ट स्क्रीन अछि ऑप्शन सी है राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम Unix, Windows, OS 2 मध्ये पारिबो but P12 no P12 is not an operating system option A next which of the following is a flash memory storage that is non volatile device that can be plugged into a USB port which of the following is a flash memory storage तो सेटा गोटे flash drive हबो USB flash drive option B is your right answer next question taskbar is used for आपण नेविगेशन करि परिबे प्रोग्राम को स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स करा जाय परिबो जदि टास्क बार रे कोनोसी प्रोग्राम पिन अछि देन आल्सो स्टार्ट करा जाय परिबो सो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग सम टेक्स्ट आपण रेक्टिफाई करिवे सेति पई एडिट करंतु एडिट है राइट आंसर ऑप्शन सी एडिट द्वारा आपण कोनोसी टेक्स्ट को रेक्टिफाई करा जाय परिबो ठीक अछि no doubt next is question number 25 which of the following toolbars allows changing fonts and their size को आपण कोन करिवे that is allow करा दिबो केउ टूलबार द्वारा formatting toolbar option B formatting toolbar है यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन what option is used to apply a paragraph at another place after removing it completely from its first place माने कोन प्रथमे सिलेक्शन करा गला देन गोटे पैराग्राफ को आपण एठू रिमूव करिवे अन्य एक जगह को प्रथम जगह रु अन्य एक जगह को सेतमे कट एंड पेस्ट अप्लाई करा जिवो ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन MS Office 2000 include a full-fledged web designing software is called Font Page 2000 option B is your right answer next question URL stands for okay repeat it uniform resource locator habo option C is your right answer next to cut the selected text which of the following keys should be pressed control X आपनकर एई प्रश्नटा बारंबार आपण प्रत्येक एग्जामिनेशन रे देखिया पई पाइबे सिलेक्शन शॉर्टकट की कट को नेकी प्रश्न आसे कट X कंट्रोल V पेस्ट एंड कंट्रोल C कॉपी which of the following statement about footers is correct प्रथम कथा होची मते कहंतु तो देखिबा व्हाट इज footers कोन ए footers ए footers होची एक गोटे डॉक्यूमेंट रो बॉटम रे जो मार्जिन दिया जाए दैट इज फुटर्स ताहले निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट करेक्ट हे परिबो यू कैन नॉट इंसर्ट फुटर इन अ डॉक्यूमेंट विथआउट हेडर हबनी बिकॉज़ हेडर कोन हेडर होची आपन को पेज रो टॉप मार्जिन को हेडर को आजिबो बॉटम मार्जिन को फुटर को आजिबो क्लियर तो विथआउट हेडर रे मध्य फुटर को आपन दे परिबे डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट फुटर्स एटा हे परिबो ऑप्शन बी ठीक लागु छी देन देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फुटर्स one for even page and one for odd page no आपण all page रे दी परिबे so option D भी कटु छी that's why option B is your right answer different section can have different footers आपण different section रे like chapter 1 chapter 2 chapter 3 रे different footers को यूज करा जाय पारे next in a split window mode one title bar looks darker than two other because माने केते बेले जेते बेले सेटा एक्टिव थिबो देखंतु so darker title bar shows active window gote dark अछि means that is active अछि sei window रे काम चाली छी next
when the user place the mouse pointer on any of the buttons and does not click them, after a few seconds a text appears at the bottom of the pointer is called option A tooltip text. এই প্রশ্নটি ଆପଣ বুঝি পারিলে or ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ simply ବୁଝନ୍ତୁ এটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ word ର example ନେଇକି ବି ବୁଝାଇ ମାନେ ଆମେ ବୁଝି ପାରିବା or word ର example ନବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ର word ଅଛି word ର home menu ରେ ଯିବା ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ clipboard ର group ରହିଛି clear ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର copy ପାଇଁ ଏମିତି option ଅଛି then cut ପାଇଁ option ଅଛି then ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି format painter ଠିକ ଅଛି then ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର cursor or pointer ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଉସ ର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା cursor କୁ ओके एठारे आनी आपण रखिबे या ऊपर आनी रखिबे किंतु टच मींस या ऊपर क्लिक करिवे नाही तो एठी आपण माउस रो पॉइंटरटा किछि समय रखिबा परे तो एई आइकनटा कोन रिप्रेजेंट करूची दैट इज फॉर्मेट पेंटर एठी आपनकर शो हेबो तो सेटा को जाउची टूल टिप टेक्स्ट क्लियर और जदि हमें बेस्ट एग्जांपल नबा देखंतु आपनकर सेटिंग अछि क्लियर आपनकर सेटिंग अछि देन आपनकर एठी व्हाट्सएप अछि स्मार्टफोन रे देन एठी गूगल क्रोम अछि इट मींस एटा मन कर धरि नियंतु गोटे विंडो रे ओपन करा दैछि क्लियर तो माउस रो पॉइंटर एठी सेटिंग को ई सेटिंग ऊपर को निया जिवो जेतबे एठी डबल क्लिक करिवा दैट इज ओपन हबो किंतु आमे जेतबे एही आइकन ऊपर को नबा देन एटा कोन दैट इज सेटिंग एठी शो हेबो एटा होजे आपनकर व्हाट्सएप दैट इज शो हेबो बट आमे क्लिक करि नाहंती जस्ट माउस एहा ऊपर रखिले दैट इज एटा कोन आपनकर दैट इज शो हेबो एटा को आजो टूल टिप टेक्स्ट क्लियर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट टू सिलेक्ट फुल पैराग्राफ आपण केमिति फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करि पाइबे कोहंतु क्वेश्चन नंबर 33 आपण केमिति फुल पैराग्राफ को सिलेक्ट करि पारिबे व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर पोजीशन द एरो पॉइंटर देखंतु प्रत्येक ऑप्शन रे आपनकर कोन रहछि पोजीशन द एरो पॉइंटर प्रत्येक रे आपन को एरो पॉइंटर को पोजीशन को निया जिवो सिलेक्शन बार मते कोहंतु कोन है सिलेक्शन बार सिंपली बुझंतु एटा होछि डॉक्यूमेंट पेज एठारे आपनकर कोन लेखा जाउछि आपन किछि भी पैराग्राफ लिखि छथि देन यार जो वर्टिकली बा यार जो लेफ्ट साइड रे जो मार्जिन रहिছে सेटा को आदिबो सिलेक्शन बार क्लियर एडजसेंट टू द लाइन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस वंस हबनी एडजसेंट टू द लाइन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस एटा आपन को डबल क्लिक करियार अछि एंड राइट माउस वंस नो राइट माउस ट्वाइस एटा हबनी सो ऑप्शन बी हबो राइट आंसर इट मींस सिंपली जदि बुझिबा एटा होछि आपनकर डॉक्यूमेंट रो पैराग्राफ रो लेफ्ट पार्ट रे गोटे सिलेक्शन बार रहिछि एठी आपनकर कोन नेबे दैट इज सिलेक्शन बार रो एडजसेंट को जिबे टू द लाइन को जिबे मनकर फर्स्ट लाइन को जिबे ओके तो ई साइड रे आपनकर माउस पॉइंटर और कर्सर रखिबे देन लेफ्ट माउस को माने माउस रो लेफ्ट बटन को आपन दुई थरा क्लिक करिवे दुई थरा क्लिक करले आपनकर गोटे फुल पैराग्राफटा सिलेक्ट हबो फुल पैराग्राफ सिलेक्ट हे परिबो तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके तो इटा आपण जदी इफ यू हैव लैपटॉप और कंप्यूटर आपण वर्ड ओपन करिवे ओपन करिया पर इटा आपण प्रैक्टिकली करि परिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेस ए टैब टॉप एट एवरी डैश मार्क ऑन द रूलर इट मींस वर्ड माने माइक्रोसॉफ्ट रो वर्ड रे कहला जाउची जदी आपण टैब की को प्रेस करिवे बाय डिफॉल्ट आपनकर पॉइंटर और कर्सर हाफ इंच जंप करिवो 0.5 इंचेस जंप करिवो ऑप्शन बी एवर राइट आंसर ओके नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर पई कंट्रोल सहित ई को प्रेस करा जाय ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर अलाइन नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल गोटे टेबल को स्प्लिट करिवे कंट्रोल शिफ्ट एंटर ऑप्शन बी हबो ठीक अछि कंट्रोल शिफ्ट एंटर नेक्स्ट एन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम केते परिबो 1,48,576 मन रखन ओके एति को नंबर रो आपनकर रो रहिछि नेक्स्ट द रोमन सिंबल फॉर द लास्ट कॉलम इन एन एक्सेल शीट इज एठी कोहा गला सेटा थला रो एटा होछि कॉलम रो रोमन सिंबल रहबो XFD ओके देन यार एटा होछि आपनकर रोमन सिंबलटा XFD पर्यंत आपण कॉलम क्रिएट करि परिबे और आपण पहुंची परिबे किंतु एटा जदि हम नंबर्स रे देखिबा 16384 टी कोन रहिछि आपनकर कॉलम रहिछि मने रखंतु नेक्स्ट which command is used to copy the formula not the value from one data to another formula copy करिए आपण value नो सती paste special को जाई परिबे ऑप्शन बी
टेस्ट स्पेशल हबो यार राइट आंसर एटा तार शॉर्टकट की एंड हाइपरलिंक होची गोटे नॉर्मल टेक्स्ट को आपण लिंक रे कन्वर्ट करि परिबे दैट इज कंट्रोल प्लस के होची हाइपरलिंक रो शॉर्टकट की आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच शॉर्टकट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट करंट डेट सेमे कंट्रोल सहित सेमीकोलन को यूज करा जाय कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आपनकर करंट डेट इंसर्ट हेबो व्हाट इज केसे कोहेरेंस कंसर्न्ड विथ कोंतु केसे कोहेरेंस कंसर्न माने केसे कोहेरेंस रो प्रॉब्लम कोन हे परिबो व्हिच ऑप्शन हेबो यार राइट आंसर केसे कोहेरेंस रो प्रॉब्लम ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन लोकल केसे इट मींस सिंपली जदि हमें बुझिबा केसे कोहेरेंस रो प्रॉब्लम होची धरि नियंतु दुईटा प्रोसेसर अछि दुईटा वैल्यू शो करिवे फॉर सेम लोकेशन रे दैट इज डील करबा होची केसे कोहेरेंस रो कंसर्न दैट इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन लोकल केसेस ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 which bus is used to carry data between the processor and memory डाटा को केउ बस कैरी करे डाटा को केउ बस कैरी करिवो ऑप्शन सी डाटा बस हेबो राइट आंसर डाटा बस इज योर राइट आंसर एड्रेस को कैरी करिवो एड्रेस बस सिग्नल कैरी करिवो कंट्रोल बस नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIMD रो फुल फॉर्म कोन हो कोन SIMD रो फुल फॉर्म कोन हिजबो SIMD रो फुल फॉर्म होची सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट in which addressing mode is the operand directly given in the instruction एटी प्रश्न आछबो व्हाट इज operand रो अर्थ हो जेहा डाटा एक्ट करिवो ऑपरेटर भाबरे क्लियर ताले in which addressing mode is the operand directly given in the instruction immediate addressing mode IAM immediate addressing mode is your right answer next which of the following is a type of computer memory that is volatile माने कोन डाटा लॉस्ट करिवो random access memory of option C is your right answer next which register holds the address of the next instruction to be executed केउ register hold करूची एटा स्टोर करूची प्रोग्राम काउंटर register option B हेबो हेरो right answer which of the following is not a part of the von Neumann architecture सेथरे कंट्रोल यूनिट रहिची arithmetic logic unit कहि परिबा registers कहि परिबा किंतु compiler रो भूमिका नाही option D is your right answer next question which was the first electronic general purpose computer प्रथम electronic general purpose computer होची ENIAC electronic numerical integrated and computer ENIAC रो फुल फॉर्म मन रखंतु the first programmable computer was built by whom प्रथम programmable computer को build करथिले Bernard Zeus Z series रो कंप्यूटर थिला था Bernard Zeus next which generation of computer used vacuum tubes को केउ generation of computer यूज करा जाउतला first generation vacuum tube second generation रे transistor third generation रे IC integrated circuit then fourth रे VLSI and fifth रे ULSI which company developed the first microprocessor को प्रथम माइक्रोप्रोसेसर को केउ कंपनी डेवलप करथिला प्रथम माइक्रोप्रोसेसर को इंटेल कंपनी द्वारा डेवलप करा दैथिला ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर ओके इंटेल कंपनी नेक्स्ट who invented the world wide web कोंतु www रो फुल फॉर्म होची वर्ल्ड वाइड वेब याको के इन्वेंट करथिले टीम बर्नर्स-ली ऑप्शन ए टीम बर्नर्स-ली www जहां वर्ल्ड वाइड वेब याको इन्वेंट करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 which memory serves as a buffer between RAM and the CPU केउ मेमोरी सर्व करछि बफर माने गोटे टेम्पररी स्टोरेज भाबरे कहा का मध्ये रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिकॉज़ RAM एंड CPU रो परफॉर्मेंस को ही कंप्यूटर रो परफॉर्मेंस होय जाय एवं एही दुईटा मध्ये थिबा गोटे टेम्पररी स्टोरेज होची एसए मेमोरी ऑप्शन सी एसए मेमोरी हो यार राइट आंसर which of the following is a valid Windows utility for managing process and application which of the following is a valid Windows utility for managing process and application process करिबा एवं यार एप्लीकेशन हबो task manager option B task manager is your right answer
Where is the BIOS stored in computer? BIOS माने कोन बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जहां आपनकर कंप्यूटर जेतेबेले रन करा जाय सेतेबेले BIOS रो भूमिका थाए एहा ROM किबा फ्लैश मेमोरी रे स्टोर हेबो. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which memory type retains data even when the power is off? पावर ऑफ करिबा परे मध्य डाटा को से स्टोर करूची, रिटेन करूची, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट, इन विंडोज which shortcut key opens the file explorer? shortcut key कोन विंडोज की प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर ओपन होबो. which shortcut key is used to open the find and replace dialog box in Microsoft Word? find and replace dialog box को कंट्रोल H द्वारा ओपन करा जाय. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल Z, एटा होजे आपनकर कंट्रोल Z रो फंक्शन कोन कहबा, do in most MS Office application like Word, Excel and PowerPoint रे undo the last action. undo करिया पे यूज करा जाय. redo पे आपनकर कंट्रोल Y, save पे कंट्रोल S and open पे open the print dialog box पे कंट्रोल P. next, what is the full form of USB? कहंतु USB रो फुल फॉर्म कोन हिजबो? USB रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सल सीरियल बस. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस होची USB रो फुल फॉर्म. नेक्स्ट, the dash layer change bits to electromagnetic signal. data रो smallest unit को bits कहा जाय एवं एही bits को कन्वर्ट करिवो electromagnetic signal रे. bit कन्वर्ट हेबो signal रे physical layer रे. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. receiving data from a remote server such as an FTP file transfer protocol or web server is called, that is downloading. सर्वर रो कंप्यूटर को डाउनलोड, कंप्यूटर रो सर्वर को अपलोड कहा जाय. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो आर नोन एज कोन हबो? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो को फॉन्ट रो इफेक्ट्स कहि परिबा. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. फॉन्ट इफेक्ट्स एबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, the option in Excel that allow you to manually select the page layout boundaries for printing. printing पई आपण manually select करिवे, सेति भाई set print area को चूज करा जिवो. ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर. नेक्स्ट, when you are in file explorer, how will you create a new folder with shortcut key? new folder को create करिवा shortcut key जरिया रे. control then shift key then n. मन रखंतु control n नुह, control सहित shift then n, एटा को मन रखिबे परीक्षा आसी पारे. To create a newspaper like layout in your Word document, you need to choose dash option from the layout tab. newspaper like layout माने कोन? newspaper रो layout केमिति थाय, that is column रो फॉर्मेट रे थाय, एबे आपण column को चूज करिवे. ऑप्शन बी है राइट आंसर. The application used for viewing web pages is known as browser. example Microsoft रो Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple रो Safari. Which of the following utilities can be used to compress a file to reduce its size? WinZip को यूज करा जाए, Windows zip फाइल को यूज करा जाए. मन रखो. What is the shortcut key to start a PowerPoint presentation? गोटे PowerPoint रो प्रेजेंटेशन को आरंभ करि परिबे F5 फंक्शन 5 की जरिया. This is a series of audio files made available in digital format for downloading or listening over the internet. audio file रो series को कहजिबो podcast. podcast is your right answer. This is a sequence of well-defined instruction written in English language to solve problem को जहां solve करिवो गोटे instruction algorithm को कहजिबो algorithm. next, the allocation and deallocation of memory is managed by memory management unit, MMU. allocate करिबा किबा deallocate करिबा. next, question number 33, the process of starting a computer by initiating pro hardware such as bottom press or by a software command, that is कहजिबो booting. booting केते प्रकार रो कोन? दुई प्रकार रो. कोन कोन? गोटे होची cold booting, अन्यटी होची warm booting. cold booting माने कंप्यूटर को आपण ऑन करछंती, स्टार्ट करछंती, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करिबा होची warm booting. which among the following is a cloud storage service offered by Microsoft? Microsoft द्वारा प्रोवाइड करा जाउता गोटे क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित मध्यरु केउटा? that is OneDrive. OneDrive है वो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, the breaking of a large pocket into smaller ones for fitting into a network is called. break करिवा अर्थ कोन? that is fragmentation करा जिवो. ऑप्शन बी है राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, using dash option in Microsoft Word you can create quick access to web page with a click.
लिंक रे कन्वर्ट करंतु हाइपरलिंक शॉर्टकट की कोन कंट्रोल सहित की दैट इज हाइपरलिंक आपनकर क्रिएट करा जाय परिबो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फुटनोट ऑप्शन इज ग्रुप्ड अंडर द रेफरेंस टैब गोटे होची फुटनोट अन्यटी होची एंड नोट डॉक्यूमेंट एंड रे आसीबो किंतु फुटनोट आपनकर डॉक्यूमेंट रे थिबा प्रत्येक पेज रो एंड रे आसीबो dash tool is used to show more decimal place in an ms excel रो सेल रे more decimal place को शो करा जिवो नंबर को जिबा इंक्रीज करिवा इंडेंट को ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नंबर देन इंक्रीज इंडेंट नेक्स्ट द ऑप्शन टू प्रोटेक्ट द एक्सेल शीट एंड वर्कबुक इज ग्रुप्ड अंडर डैश टैब एक्सेल शीट किबा यार जो गोटे वर्कबुक आपण प्रोटेक्ट कराइबे लाइक आपण पासवर्ड को प्रोटेक्ट कराइ परिबे सेति भाई रिव्यू टैब अंडर रे दैट इज अवेलेबल रही आज रो लास्ट क्वेश्चन दिस इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप्ड बाय गूगल निम्नलिखित मध्यरु कोनटा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जहा द्वारा आपण वीडियो चैट करि परिबे एवं गूगल कंपनी द्वारा सेटा प्रोवाइड करा जाउची गूगल रो मीट हबो सेमिति जदि आसीबो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट रो टीम्स आल्सो गोटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप और वीडियो मीटिंग ऐप अटे जहा जरिया आपण वीडियो चैट करि परिबे